Good morning, students. I hope you all are safe. Welcome you all in plus one session 2020 and 21. I hope you all are safe in your home, and today we are going to discuss, as you all have opted for commerce stream. So let's start with it. In brief, I am telling you the meaning of commerce, and I'll take my subject as myself Mridula. So I'll take your accountancy lecture. Okay, so let's start with commerce. So what does this mean, as you have opted for this term as stream commerce? Commerce is the sum total of all such activities which are engaged in buying, selling, exchange, distribution and consumption of goods. Or you can say in brief, in one line, if I said what does this commerce means? Commerce means which just bridges the gap between production and consumption. Here, commerce. This gap will be just fulfilled by this term, commerce. So it means in commerce we are going to include all the business activities as well as trade, aids to trade. Aids to trade means auxiliaries which are helpful in trade. Just like if I am doing or engaged in the business of manufacturing, trading, then I will be in the need of banking services, then insurance services are there, warehouses are there, transportation is there, then further communication is there. All these activities, industries as well as all these, we just sum total of all these things, that means this is the commerce. So you all have opted for this stream, so I just wish you all the best and for your result also. Today I'll just start with my topic, that my subject is accountancy. One more myth or one generally, okay, students they use the word accounts बिकॉज जनरली आई हैव सीन स्टूडेंट्स जब सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो वो जनरली बोलते हैं मेरा अकाउंट्स का पीरियड है, बिजनेस का पीरियड है. दिस टर्म अकाउंट्स इज नॉट द एग्जैक्ट वर्ड. योर सब्जेक्ट इज अकाउंटेंसी बिकॉज इन दिस सब्जेक्ट knowledge we are taking and we know or we come to know how to make accounts. So our subject is accountancy, not accounts. So the very first question which arises, okay, why this subject, okay, there is a need of such subject arises because earlier that was not at all any such subject. पहले accounts का कोई subject नहीं होता था. तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपका ये subject emergence में आया. बहुत सारे thinkers, experts और यू कैन से जितने भी अकाउंटेंट्स थे उन्होंने ये सब्जेक्ट क्यों बनाया. उसका रीज़न क्या था कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन द बिजनेस वाज डन ऑन अ वेरी स्मॉल बेसिस, स्मॉल स्केल बेसिस. मीन्स कि 1% इज सफिशिएंट इनफ टू रिकॉर्ड ऑल द एक्टिविटीज डन इन अ पर्टिकुलर डे. और जैसे हम देखते हैं कि पहले वाले पिक्चर्स में कई बार मुनीम या वो होते थे तो वो अपने एक लेजर अकाउंट जैसे हम बोलते हैं बही खाते बनाते थे जिसके अंदर वो सारे दिन के ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे लिखते थे. एंड एट द एंड ऑफ द डे दे सम अप विद ऑल सच एक्टिविटीज कि कितने पैसे आए, कितने गए और उसका सारा हिसाब कर दिया. बट एज द बिजनेस ग्रोज आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन द नीड अराइजेज कि देयर मस्ट बी वन सिस्टमेटिक सब्जेक्ट विच रिकॉर्ड ऑल द, you can say all the whatever we are gaining or we are giving, or all the you can say activities just like how much sales, purchase, profit, loss, how much money I have to pay to the outsiders, how much money I need to be collected from the outsiders. तो ज़रूरत किसकी पड़ी इन सब एक्टिविटीज़ को, जब वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हो गई तो उनको कोई एक पर्सन रिकॉर्ड करने के लिए सफिशिएंट नहीं था. दूसरा, कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर्टिकुलर एक सिस्टमेटिक आपका सब्जेक्ट हो, उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ों को एक हम उसमें रिकॉर्ड कर सकें. तब ये सब्जेक्ट अकाउंटेंसी इमरजेंस में आया. अब इस सब्जेक्ट के बाद एक प्रॉपर डिफरेंट एक्सपर्ट्स और थिंकर्स ने
अपने अपने डेफिनेशंस दी, जिसके अंदर उन्होंने सब्जेक्ट को और क्लियर करा। और हमने इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे, मैथमेटिशियंस थे, जिनकी हेल्प से ये सब्जेक्ट आपका अकाउंटेंसी हुआ, इमर्ज हुआ। अब व्हाट डज दिस अकाउंटेंसी मीन्स? आई एम गिविंग यू वन डेफिनेशन। Accounting is the art of recording, classifying and summarizing. I am underlining 3 words. Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. This definition is given by American Institute of Certified Public Accountants. In this definition, the whole meaning, I will let you explain what does this mean. This is our accounting cycle. Accounting cycle means whenever we are going to record the transactions, it comes in a proper way, step by step. Means firstly, any transaction means business transaction which are related to the business. When we are going to record them in our books of account, this is our very first feature of accounting, that is recording. That is why it is called accounting is the art of recording. There is a proper method to record the business transactions into our books of accounts. So how to record, that will come to know in our chapter journal. There are different chapters in which we will gain the information how to record the transactions into our books of accounts. So the very first step is recording of transactions into our business transaction. This transaction is firstly recorded. Journal means this is the book in which such transactions will be recorded firstly. So after that recording, the word classifying is there. Classifying means this word comes from classification. Classification का मतलब क्या होता है? जब हम एक जैसी चीज़ों को एक जगह पे क्लब करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसे क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जैसे अपनी साइंस की टर्म्स में डिफरेंट टर्म्स करी होंगी। In the same way, here also in accountancy, we just classify the same nature of transactions at one place. For example, suppose मैंने किसी person से goods खरीदी. Goods means in which I am dealing. मैंने 20,000 की goods खरीदी राम से. उसके बाद मैंने परचेज करी goods श्याम से 50,000 की. उसके बाद मैंने एक और person सुधीर से goods खरीदी. तो टोटल मैंने परचेज कितनी करी? तो मैंने एक अलग अलग परचेज अकाउंट लिखने के बजाय मैंने परचेज अकाउंट एक कॉमन सारे ट्रांजेक्शन्स को मर्ज करा और एक अकाउंट उसका नाम दिया परचेजेस अकाउंट, जिसके अंदर वट एवर परचेज ऑफ गुड्स आई एम डूइंग, आई एम रिकॉर्डिंग ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स इनटू वन अकाउंट ओनली। इट मीन्स मैंने उन सब ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पे क्लासीफाई कर दिया, एक जगह पे रिकॉर्ड कर लिया। तो इट मीन्स अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन्स की एंड देन वी क्लासीफाई द ट्रांजेक्शन। तो क्लासीफाई मीन्स सेम ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पे क्लब करना। तो उसके लिए जो हम एक बुक बनाते हैं, अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, उनको हम नाम देते हैं लेजर अकाउंट्स। तो इट मीन्स ट्रांजेक्शन हेयर ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन, नॉट द पर्सनल ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्टली रिकॉर्डेड एंड देन क्लासीफाइड। यानी सबसे पहले हमने बुक बनाई जर्नल, उसके बाद हमने ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करा और हमने एक बुक बनाई लेजर। एंड देन इन डेफिनेशन द वर्ड समराइजिंग इज देयर। समराइज करने का मतलब क्या होता है? समराइजिंग मीन्स इन अ शॉर्ट फॉर्म, समरी फॉर्म में किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने इंग्लिश की उसमें जनरली समरीज लिखते हो, चैप्टर की समरी क्या थी, पोइम की क्या थी, इन द सेम वे हेयर ऑल्सो। अगर मैंने अपने सब अकाउंट्स में जो इन्फॉर्मेशन है, एक जस्ट ओवरऑल इन्फॉर्मेशन एक अकाउंट के अंदर पूरी की पूरी समराइज्ड फॉर्म में देनी है, तो उसको मैं क्या नाम दूंगी? समराइजिंग।
मीन्स जितने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करे उसके बाद उन्हें क्लासीफाई करा और उसके बाद उस सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने एक जगह पे इन शॉर्ट ब्रीफ में क्लब कर दिया. सो दिस इज कॉल्ड समराइजिंग. And in summarizing, we just make trial balance. So this is the account. We'll come to know how to make this account in summarizing. These are the different chapters that we'll cover in our this book, accounting. And then after that, summarizing in a significant manner. In a proper manner, I'm making all such entries recorded in my books. And in terms of money. In terms of money means only those transactions are recorded in our books of account which which can be expressed in money term. For example, as a businessman, I am having 500 tables are there, chairs are lying there, 20 chairs are there, 10 computers are there, 5 trucks are there. So I can't add up all these terms. So firstly, these are to be expressed in money term. मैंने सबकी valuation money में करी. Then I just added up all these things. Okay, how many assets I am having, property I am having. So in this way, I am just what I am doing, all recording such transactions in money term only. Then after that, in a significant manner and in terms of money, transactions and events, which are in at least of a financial character. Which are in part of at least one financial character means we generally take our accounting period which starts from 1st April and it ends on 31st March. Means we are going to record all the transactions from 1st of April and it ends to 31st March. So this is our accounting period, financial year जिसे बोलते हैं. तो हम एक साल के पूरे अकाउंट्स बनाते हैं, सारी रिकॉर्डिंग करते हैं एंड एट लास्ट व्हाट विल बी द रिजल्ट एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ. नाउ व्हाट आर द रिजल्ट्स देयरऑफ? विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग वी जस्ट मेक आउट आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आपने घर में भी देखा होगा, आपके फादर वगैरह वो अपने आगे रिटर्न्स फाइल करते हैं तो पहले वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. तो हमारा एंड रिजल्ट, हमारा मोटिव क्या हुआ अकाउंट्स बनाने का या सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का? टू मेक आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो दिस इज द इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स जस्ट टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो इन ओवरऑल, in this definition, it covers all the features of accounting. Okay, recording is there, or you can say money, all the transactions should be recorded in money term as well as then classifying is there, then summarizing, interpreting, communicating. So these are the main, you can say, these are the features of accounting. So in this definition, we cover all the features. And this is our accounting cycle which starts from transaction and it ends on communicating the results to interested parties. So today we just come to know why there is a need of accountancy, how this subject comes into existence, then what does this mean, and then what is the accounting cycle. I hope this is clear to you. Don't be panicky. Just listen to me very carefully. I'll take all the terms side by side. If any doubt, you can just at the end of the session, or you can write down, or regarding any term that is not clear to you, you can write down in your you get your doubt or query in the group also. Thank you. In the next session, we'll start with few accounting terms also. Thank you very much.